Should I? Yeah, ma'am. Go ahead. Sir, you start the recording. I started, ma'am. Okay. It is live on YouTube. Okay. Okay. So link Good is evening. there in chat box. Good evening, dear teachers. This session is the third in the GC Level 1 series organized by GEG Agra. I, Sonali Goswami, co-leader GEG Agra, welcome you all to this session. Today's session will be moderated by Mr. KK Singh, who will be teaching Google Slides and Google Sites. Mr. KK Singh is an eminent educator at Army Public School, Agra. He has been working in this institution since 1981, where he introduced computer science as a subject. He has been the head examiner for CBSE board exams since 2002. He was nominated in 2015 and 16 as subject expert for making marking schemes at Delhi Public School DPS RK Puram. Sir is educationally adept and has completed his PG in MCA, MSc PGT CS. Mr. KK Singh is also certified in Google Educator Level 1 and 2. We are honored to have you here with us, sir. Without further ado, now I hand over the session to you, sir. Sir, please start. Let's have a photograph, sir, and then you start the session, sir. Let us all switch Okay. on the cameras. Please, teachers, we request you to have a click first, and then we start the session. Sabah, switch on the camera in the beginning only. If somebody is still thinking not to switch it on, kindly switch it on, please. Satyen sir, Ranjana, Manisha. So my camera is on, sir. Manisha, Sajesh. Here Ah, there are two IDs. Manisha Sajesh and Manisha Sajesh in So that okay, sir. red. From my laptop, I will let it. Ranjana's is switched off. Ranjana, please switch on your camera. Samistha, Samistha ma'am. तो लेना है একটা ফটো কিছু না ওদিক দিয়ে আমি অন আছি Sir, I think you can start now. One more screenshot I am taking. Then I'll start. Thank you, teachers. So good evening. Am I audible now? सुनाई दे रहा है ना सबको? Yes, sir. Okay. So see, GCE level 1. There are very small questions, but you have to give the mind, concentrate, and then you have to answer, because the type of the question would be your option based and drag and drop plus match the columns. So three kinds of question patterns will be there, and you will have to think, and you will be given 3 hours, complete 3 hours, and this is your proctored exam. Means you don't have to move here and there. Yes, you can take a leave of 2 or 3 minutes for bio break,
but you should come to the pace, because the proctored camera will check your photograph whether you are the genuine person. So when you enter exam, initially you'll have a photograph clicked, and after some time, as you come after bio break, then again the camera will pause and will match the photograph whether you are the genuine person. ऐसा तो नहीं है कि आप किसी को replace कर दिए हैं. And seriously, you'll be observed, proctored. So any moment means there should not be any person around you, even shadow of some other person. And if they find, Google finds that it is cheating, then and there your candidature will be cancelled and you'll be given a mail. So be very careful and do judiciously. Next, we'll be starting our Google Slides and sites. So as we have already done during the pandemic, slides and sites, because the last webinar which I had taken was on Google Sites. So that time I had also told you that sites are not the websites. These are the wardrobes or the briefcases. Any teacher can collect, or any teacher can store his or her documents and preserve in this briefcase. And this briefcase is available to the person whom you want to see, because there are some restrictions. Means you want to share you can give the rights to the users, you can give the rights to the parents, you can give the rights to the students who can see it. And some of the items, if you want to protect them, you hide those items so that the person who are not authorized to see will not be able to see it. Okay, so I am sharing my screen. So I hope my screen is visible to you. So this is the presentation on Yes, sir, visible. this is the presentation on Google Slides. And for making the presentation, we use PowerPoint. And if this is open office, then we use presentation. So this is the software. But this kind of presentation, or this kind of platform which we learn through the Google apps, is the cloud based. Means whatever you are making here, whatever you are designing here, this is available with you all the time wherever you go. If you go to some other school and if you want to show your presentation, you don't have to carry the pen drive. You simply log in your ID and present your program. And the basic thing, or the important thing which I want to tell you, that if you find any error, you'll be able to correct it then and there. So just put down the presentation and correct it and restart. So this is possible. But when you create a presentation through PowerPoint, then you will have to check
if you are going to correct, all the copies of presentation should be corrected, or you have to make the amendment in every version of the PowerPoint presentation. But over here, since there is only PowerPoint presentation, it's not PowerPoint presentation, it's a slide presentation, and there are many themes also, very attractive themes by which you'll be able to create very attractive presentations. And in Google Slides, you can embed different Google apps. Like if you want to embed any Google Doc, you can embed or you can link. If you want to link any Google Sheet, you'll be able to link the Google Sheet. And foremost thing is, if you want to change anything in the Google Sheet, that value will be updated then and there automatically. Means in PowerPoint presentation, I mean a slide presentation, as well as in your Google Sheet. So how to create it? Let's work on it. So the topics which we are going to cover: setting up the master slide. What is a master slide? Basically, if you see my presentation, you'll see the same layout in every slide. I have not changed every slide manually. Once the master slide is created, this slide is applicable to every slide of the presentation. So we'll learn how to create the master slide. Opting for appropriate colors for text color and background color. This depends on the user कि उसको text color कैसा चाहिए और background color कैसा चाहिए. Because I'm discussing this presentation in both the languages, means English and Hindi, because हमारे साथ हिंदी वाले टीचर्स भी हैं और इंग्लिश वाले भी हैं. तो इंग्लिश वाले मुझे माफ़ करिएगा क्योंकि हिंदी को भी देखना है और इंग्लिश को भी देखना है. सो वेयर एवर यू फाइंड एनी इशू और यू कैन शेयर इट विद मी एंड आई विल गिव द सॉल्यूशन. When you create the presentation, the third point, add the slide number. Normally what happens when you create the presentation, there is no slide number and you will have to give it manually. But there is an option by which you will be able to give the slide number automatically. So slide numbers are generated automatically. You can add the text, you can insert the clip arts, you can insert the images and videos. So images and videos, since these images are the vector images, means they can the size of the images can be increased or decreased as per the requirement, and the pixels are automatically adjusted. Videos, you can insert videos and part of video you'll be able to do it. Inserting tables option is very important when you are going. You must have seen on first day that the program which we are going to cover in these 5 days. So that was the slide, and there was you have seen the tables. Embedding Google Sheet content and charts, means if you want to embed charts, you will be able to embed charts or insert the chart in the presentation. And Google Sheet means your Excel sheet. मतलब मैं तो यही जानता हूँ कि आप Excel sheet पे ज़्यादा भरोसा करते हैं कि पता नहीं Google Sheet पता कहाँ धोखा दे जाए, बट ऐसा नहीं है. Google Sheet equally good and with advanced features. You can use Google Sheet everywhere. Drawing and editing shapes. This is very important. If you want to create any drawing in Google Slides, you'll be able to create the drawing and added the shapes. So we'll discuss this. Making diagrams, this is a part of the slides. Inserting different symbols and using format options. Format options means if you want to give effect to your slide, you can give using format options, and you can even animate the slide or slide object. So how do we start slide? So first you log in through a browser.
your ID should be authentic. It should be yours ID, because whatever you are creating is being stored in the cloud, and the cloud is your Google Drive. So over here, if you I'll suggest that you should create a proper folder in Google Drive in which your presentation will be stored. Otherwise, 15 GB is a huge space where if you like अगर हम किसी ग्राउंड में हैं और हमसे कहा जाए कि 400 मीटर का रेस पूरा कर दीजिए, तो until and unless this ground has the tracks, he cannot cover the 400 meter race. और आपको ये पता भी नहीं होगा मुझे किस डायरेक्शन में दौड़ना है. So until and unless folders are there, partitions are there in the Google Drive, this will give you some difficulty to track your program or track your product in the Google Drive. So better, it is advisable that you create a folder and name the appropriate folder name, and in that folder you can save your program. And there's additional benefit of creating folder, that you can share this folder with your peer group. किसी भी टीचर के साथ में आप ये फोल्डर शेयर कर सकते हैं, so that the teacher or the person can use the product, use the file which are in the folder. So how to start slide? So go to the waffle or app box. There are 9 dots, and as soon as you click on these 9 dots, you'll see the menu or window, and from here you'll see the icon slides. So when you click the slide, this kind of window appears on your browser, and here, since you are going to create new presentation, so click on plus sign. So this gives you the blank presentation. So this is the layout of the presentation. Here, over here you see the untitled presentation. By default, when you create presentation first time, this is untitled, so you will have to give a prominent name here. The untitled, you can change the name, title of the slide, and this part left area is known as slide pane, जहां पर आपको all the slides which you are creating will be lined up, and these are the formatting icons, formatting tools. So from here you can use the tools to format your slide. Presentation means a show button. If you want to present your presentation or show to the audience, you can click this button and this starts running the presentation. And in addition, you have ready-made themes which you can apply on your presentation. This button is share button, and if you want to share this presentation to your friend or your teacher or co-teacher, you can use this button and share. Because normally इतना तो हम सीख गए हैं कि बजाय इसके कि we mail the content to the person, we directly share the content to the person using the share button. Whether this is Google Docs, whether this is slides or Google Site, Google Sheet, anything. If you want to share with somebody, you have the button, and as soon as you click the button, it asks for the email ID, and when you mention the email ID, the presentation or the item will be selected with the person. And over here you see the boxes. There are 2 boxes. These boxes are known as placeholders or text boxes. Though there is
the icon on toolbox you can use to create the placeholder and text boxes. See here, once you have gone through the interface of the slide, you must give the meaningful name to the presentation. So here this previously it was untitled presentation. Now this is titled presentation because I have given the new name. And these are main menu or menu bar, you can say. So over here, this is title slide, and over here you can give title and the subtitle. Next, if you want to insert any slide, means आप presentation तैयार करते जा रहे हैं, and if you want to create a new slide, either you go via menu bar or you can simply press Ctrl M. One slide is inserted in your presentation. So design accordingly how to insert, because this is the demand of the presentation. You can press Ctrl plus M, a new slide is inserted. Theme builder is very important because जैसा कि मैंने पहले ही बोल दिया था कि मास्टर स्लाइड और थीम बिल्डर ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इफ यू वांट टू मेक द स्लाइड सिंक्रोनस। एक जैसी स्लाइड्स अगर हैं, हर एक का एक सा लेआउट है, देन यू कैन यूज theme builder. So how to use theme builder? I'll show you how to use theme builder. Over here I'm going to create the slides.google.com. So see, this window is opened, and from here you can click plus, and this way new site comes up, and this is purely untitled slide. So first job is to give the name. My presentation. You don't have to save, and you just start creating or start designing the presentation. So when you want to give the title like presentation on maths by, say, GCE. If you want to change the font, select the word and change the font whichever you want. I have taken trebuchet, and size, you can select the size also, and along with this you can give the colors of the font like this, or if you want to take custom colors, so slide on this bar and this color palette comes up, and from here you can select any of the color of your choice. So now this is the color. Okay, from here for formatting your slide you can use all the options, and if you want to use insert the new slide, go to the slide button
or say new slide, but I want you to go to the theme builder. So for theme builder, so here this is theme builder. Here you can design your slide. Suppose I'm going to take a shape or the text box. Here I'm going to give fill the color and एक और लिया मैंने टेक्स्ट बॉक्स. इसको मैंने सपोज कोई दूसरा कलर दे दिया this way. And if you want to give any a logo, you can give logo here. So to give the logo, you will have to select the picture. So image, upload from the computer. Suppose GEG Agra icon I'm going to take. And ये जो है इसको मैं resize करके यहाँ रख देता हूँ. एंड कुछ और भी इसमें चेंज करने की कोशिश करता हूँ. इसमें मैंने कलर फिल किया ग्रीन. एक और लिया मैंने ये Control C and Control V so that we can make a copy of this. इसको मैंने दूसरा कलर दिया रेड. एक और लिया इसको मैंने सपोज दूसरा कलर दिया से येलो. एक और कुछ ले लेता हूँ लाइन नंबर. तो यह देखिए यहाँ पर ये एक हैश आपको दिखाई दे रहा है. इसको हम अलाइन कर सकते हैं. अलाइन करने के लिए हमें जाना होगा इसको मैं अलाइन करने की कोशिश करता हूँ. नाउ दिस इज इन मिडल. इसका थोड़ा साइज और बढ़ा देते हैं. साइज ले लेते हैं सपोज 18. एंड अगर इसमें आप कलर फिल करना चाहते हैं तो इसका कलर मैं कर देता हूँ वाइट और इसका बैकग्राउंड कर देता हूँ. आई एम टेकिंग इट्स बैकग्राउंड एज रेड. सपोज
this layout I have done, and then this is the first slide, and second slide I'm going to take this way because here this is click to edit the theme. तो यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा डिजाइन करने के बाद ये इस तरीके से ले लेता हूँ. Like this, and color is again, text color is taking white, and background I'm taking as red. Select the font color, I am taking Roberto, and size भी इसका ऑलरेडी बढ़ा हुआ है. इसका कलर बदल देता हूँ, कलर ले लेता हूँ से ब्लू. इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं फिल करता हूँ with this, and the area of the slide I can select and change the font or font size. Again I am taking Trebuchet, and size I am taking say 18. Manually I am writing 18, and its color, if I want to change, again I am taking is the blue. Okay, and उसके बाद आप करिए क्रॉस. तो इस तरीके से आप जैसे जैसे इसमें okay. See here, because I have designed the number, but I have not chosen that insert the number, slide number. So over here, slide number, from insert menu, go to the slide number, click it, and switch it on and apply. Skip title slide, because if you skip the title slide, then slide number will begin from the second slide, and apply like this. See here, Control M, a new slide, and the number is this, and see the layout is this. Okay, so this way we can design our master, and this master will be applied to all the slides. Now next, if you want to edit this theme builder, on slide option or on slide menu, you'll have edit master. Through this option, you'll be able to resize or recreate or redesign your master slide, जो कि अभी हमने बनाया. The next is, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. टेम्पलेट आपने बना ली, और ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं. इफ यू वांट टू यूज देम, you can use this. I have shown font size, font color, told you, and this I have told you how to give the number. Until unless you turn slide numbers on, the numbers will not be displayed on the slides, and once you say on and skip the title slide, so the title slide will not have the number, but the numbers will begin from the next slide. Okay, so ये चीज मैं आपको समझा चुका हूँ. फॉर्मेट अब आते हैं हम थोड़ा सा
फॉर्मेटिंग पर, लाइक ये जो आप देख पा रहे हैं, एडिटिंग द टाइटल प्लेस होल्डर, एंड सी हियर you must be looking at this shadow. So how to give the shadow or how to give the effect to any particular placeholder? So we'll do this on the presentation. Say click on these three dots, you'll see format options. From format options, if you go to this space, over here you'll find drop shadow. So as soon as you check mark this, you'll see the small shadow on characters, and say drop shadow, and here this is the color palette. From here you can select the color for shadowing, and you can change the angle, distance, and blur radius, so that shadow would be proper. Okay, if you see this, I wanted to give the shadow to this box, but the shadow is given to the characters. If you write next word like APS Agra, same shadow is applied here. But if you want to give the shadow to this box, select it. देखिए यहाँ पर drop shadow का concept ही नहीं आ रहा है. I have selected this box, but drop shadow is not applicable here. We are not able to apply drop shadow to this box. Then how to do this? It's a very simple. You will have to fill this box with some color. So over here I am taking the color, say white. See, shadow is gone. Now you'll see the small shadow on the box. Now box looks 3D box. Distance, blur, angle, like this. If you want to change the shadow, select another color, so you'll see the shadow. And over here, if you see, upper line or the base color of this slide, both are mixed up. So it is, the box is not visible. So you should do what? You should give a line color. And its width. Now this box is visible purely, perfectly. So this way you can give the impact or shadow to the text boxes. Next,
Inserting object into the slide means if you want to insert the graphics, shape, video, audio, or any link. This is very easy. If you want to insert any image, for example, I'm taking this option here. I'm going to insert the image. For image, this is the icon. Or you can go to insert menu, and from this menu, you can insert shape, you can insert chart, you can insert videos. What about the image? What about the image? So image, I think, is changed. Shape. In shape, we have shapes, table, chart, diagram, but image option is not there. So you will have to be satisfied on this option, insert image. So when you click this button, this icon, a drop down window comes up, and from here you'll see different options. Upload from computer. If you have any image which you want to insert into your presentation, you can upload from the system, and if you want to search on the web, you can take your image from the website. So if suppose I click, suppose I'm taking school building, the school building images. You can insert any image. Select it and click on insert. So here the image is inserted. And if you want to give shape to this image, you can use shapes. I must take another shape or insert another picture. I'm taking this, insert. You can ask any question if you want to. Any question from your side? Any question? No. It means मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ और आप बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं. So taking a crop image, किस shape में आप इसको crop करना चाहते हैं? So you can take any image like this, and once you press enter, image becomes circular or the shape which you have chosen. So this way you can shape the image, or you can resize the image as per your requirement. This is purely circular. You can use arrows on this shape
See here. So this is like this. So this way we can insert the image. Now next is video. So video you can insert in your presentation, and let's go to insert the video in my presentation. So again, come to the place, Control M, inserting a video. Okay, so inserting a video, come to insert button, and from here select the video if you have or you can Google Drive. There is no image I'm taking. Man versus wild, which be select. See. एक्सक्यूज मी सर, सर आपने बोला था कंट्रोल एम और उसके बाद आपने कहा था इंसर्टिंग अ वीडियो, तो ये हमको लिखना पड़ेगा वो कंट्रोल एम यहाँ पे. कंट्रोल एम एक्चुअली क्या है? सो कंट्रोल एम इज हियर, सी हियर, न्यू स्लाइड. ओके ओके, न्यू स्लाइड वी हैव टेकन. हाँ, जो जब भी आपको कोई न्यू स्लाइड एंटर करनी है तो तो कंट्रोल हमको स्लाइड पे मेंशन करना पड़ता है इंसर्टिंग वीडियो. नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मैंने तो यू आर टाइटल जस्ट गिविंग अ हेडिंग टू इट लाइक. हाँ, ओके, बस थैंक यू. मैं टाइटल दे रहा हूँ. ठीक है. When I present this, ये वीडियो आप insert There are कर over सकते हैं. 30,000 islands in the Pacific Ocean. There are over 30,000 islands. And see here, after inserting, if you want to play a presentation automatically, then click autoplay. Otherwise आप play करेंगे तभी ये play होगा. Next, insert audio. Like video, you'll be able to insert audio as well. दोनों में कोई अंतर नहीं है. You can insert. And next is insert any link in your presentation. This is very important. Suppose this is a presentation, and in place of presentation you want to insert the link. Again, I am going to insert one more slide. This is control, again press control M. So see here, मैंने टाइटल दिया, going to insert link. Insert the link. किस पे लिंक देना चाहते हैं? I must tell you that I'm going to make a box like इस तरीके से. ये बॉक्स लेने को, और मैं एक चीज और भी कर सकता हूँ. If I remove this, I can take the shape. And now this is already filled. And if you do not want that color should appear in this box,
go to this fill color and see here transparent. So now the color will not be appear. And if you want to give color again, you should go to this color box and fill the color. So I'm going to give the color like this and add it, and see here I want to write something here, but see a cursor is not visible here. So what should you do? You should right click on this box, a menu pop up, Add text. edit the text and color, choose a color from your choice, man versus wild, एंड इसको मैं किसी लिंक से देना चाहता हूँ, कहीं लिंक इससे पहले मैं देख लेता हूँ मुझे लिंक करना है क्या है। डिस्कवरी चैनल, the most amazing student discoveries. See, this is the link. Right click on this here, copy link address, like this. Content, copy link address, and again come to the presentation, and here select this box and insert, or you can use this insert the link, or go to insert and click the link, कुछ भी आप ले सकते हैं. So since I have selected the object, so press Ctrl K, so it will give you the box, and in this box paste the URL which I have copied from the website, Ctrl V to paste, and then apply. So when you run your presentation like this, when you click this box, this arrow which is mouse arrow, when you bring this mouse arrow to any link, the mouse pointer turns to the hand. When you click this, it will take you to the website was there which we have copied. So this way we can insert. Rich soil always link. appreciates good care, so it can provide miraculous natural gifts to the farmer. However, James Bristol, a farmer from Michigan, got something more exciting from the ground. He had a field to grow soybeans, and one day he noticed something sticking out of the ground that looked like an old decayed fence post at first sight. However, the find turned out to be much more amazing. James got an So this is how you can insert a link, and the last point in this is how to insert the sheet.
Okay, this is the sheet. कैसे insert करना है ये sheet? How to insert it? Very simple. Go to any sheet which you want to bring or which you want to bring to your presentation. So I am taking any sheet like this, sheets, and out of available sheets I can select any. Selected this portion, Control C to copy, and come to the presentation, Control M, again inserting new slide, and over here I'm going to paste insert table. On the basis of to insert the sheet.
but not in the proper format. Small question I want to have. Mm, can I tell something, sir? Yeah, This is sure, the issue. sure. I've tried once. इसमें सर insert में पहले table से table option पर जाकर we have to make the rows and columns. Is it Insert, yes sir. table? Just tried. Yes sir. Just make the rows and the number of rows and columns you want to enter. Okay. उतना select, हाँ. And now copy the content that you have copied from the paste the content that you copied. Yes. Right. Exactly. You're right. Yes. Yes. Right. Right. Yes. Thank you. Thank you. Okay sir. No. So this way we can insert means first you have to insert a table from insert menu, and from here select how many rows and columns you want. So suppose I want 3 rows and 3 columns, maybe 3 columns, and from the sheet you will have to select 3 columns, and then paste it here. Link is so that's what I was doing, but that time it was not working. So if I delete it, it is still working. I had just copied the area and paste it there. Right, sir? Yes. Now it's working. It's working. Because if you unlink this sheet, then whatever you make the change in this sheet will not be reflected in the original. And if this is linked, so wherever you make the changes will be reflected into the sheet. You got it? Yes. And now I'm going to take one example of chart, if it is available. Yes, this is available. Insert chart from sheet. Kind of chart. I wanted this import. So sheet which is having the chart data, you can import this chart data from the sheet. So this way you can insert the chart in your presentation. And this is already if you click this link chart options or unlink option, then if you select unlink, this will be detected from or detached from the Google Sheet. Okay,
So what is the benefit of this if the chart is linked with the Google Sheet? So whatever changes you are making in the Google Sheet, the chart will be changed accordingly, and the image or the chart will be reflected accordingly onto your slide. And I think this option is very helpful when you present the growth of the child of your class. Right, Ishu? Yes, sir. Yes, sir. So on the whole, or in the conclusion, I would like to say that chart or slides gives the better impact as far as the teaching is concerned, and showing the impact of the curriculum, or depict this thing into your presentation. And I think I have done a lot in Google Sites, because every time when I presented my lecture in my class, I used to have slide presentation always. So this is all in our presentation, and the next is a very small portion of Google Sites I'm going to take. So if you want to ask any question from here, I'll reply, then we'll move to next presentation. Good evening, sir. Sir, I have a question. Yes, Sonali ma'am. Sir, whenever about the Google Sheets, I'm asking about the Google Sheets, Mhm. as you have just pasted and copied here in the slide. So the changes we have done in the slide will be reflected same in the original sheet or not? Exactly, हो जाएगा, because दोनों linked है ना. Yes, sir. वही पोर्शन आप स्लाइड में दिखा रहे हैं, और दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज ये आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड है कि But sir, the स्लाइड एंड particular शीट. portion we have copied and pasted now. So it is a copy paste image. कॉपी पेस्ट, लेकिन Can you आप please do it नहीं, again? उसके ऊपर आपने देखा होगा एक आइकन भी आ रहा था, लिंक आइकन भी आ रहा था. तो वहां Okay, पर fine. अगर इफ यू क्लिक Got it. दैट लिंक आइकन, वहां पर आएगा आपको अनलिंक करना है या लिंक रखना है. Okay, fine. ठीक है, इफ यू लीव Got it, लिंक्ड sir. देन इट विल वर्क. Sure. यस मैम. Sure. Got it, sir. Thank you so much, sir. सो आई थिंक और किसी कुछ पूछना है, फिर हम चलते हैं अपने दूसरे आइटम पर. सोनाली मैम, सोनाली गोस्वामी मैम. I think she is not there. Yes, sir. Ma'am has left just before 2 seconds. चलिए, कोई नहीं. तो see here, I'm going to discuss Google Sites, and Google Sites का जो क्वेश्चन वहाँ पर आपको मिलेगा वो यही मिलेगा कि पहली चीज़ तो ये है, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि you don't have to register the domain for the sites. Normally what happens when you create a site or get the site done from any vendor, the vendor registers your domain, and after registering the domain, he or she used to create the site. But here in Google Sites, you don't have to register the domain. Only thing which you require is your ID, just email ID. केवल ईमेल आईडी से ही आप जो है अपनी गूगल साइट तैयार कर सकते हैं. एंड उसका फायदा कितना हो सकता है वो ये आप जानने की कोशिश करें कि अगर आपके पास साइट है तो अपनी पूरी क्लास का डेटा आप वहां पर अवेलेबल करा सकते हैं. और जो चीज़ जो जैसे क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो सैम्पल पेपर्स हैं, अगर आप सैम्पल पेपर्स भी शेयर करना चाहते हैं तो अपनी साइट पर शेयर कर सकते हैं. एंड वन मोर थिंग, I forgot that if you want to embed this slide presentation जो कि अभी हमने डिस्कस किया है, जब भी आप स्लाइड प्रेजेंटेशन कहीं भी एम्बेड करें तो डायरेक्ट स्लाइड प्रेजेंटेशन को लिंक ना करें, उसको वेब फॉर्म में लिंक करें. एक बार मैं दिखाता सर वो कैसे होगा? दिखाता हूँ.
go to site and click on file, and on file publish to the web. Publish to the web. And when you say embed, there are two options, embed and link. ओके, सो एम्बेड एंड लिंक में जो डिफरेंस है वो ये है कि एम्बेड जैसे ही करते हैं तो ये जो कोड है, ये पूरा कोड, ये आपको यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा। इसको कॉपी करिए और साइट पे या जहाँ जैसे क्लासरूम वगैरह है वहाँ जाकर के आप इसको पेस्ट कर दीजिए। सर आपका प्रेजेंटेशन विजिबल नहीं है। Sir, we are not able to see your ओके presentation. ओके ओके आई एम सॉरी, मैंने प्रेजेंट किया ही नहीं है, आई एम सॉरी। So this is my presentation. Okay, now suppose classroom is there. Classroom. My presentation. Let's see. So click on file option, and on file option, when you move down, you'll get publish to web. Okay, publish to web. If you want to link this URL, ये भी work करेगा. And if you want to embed the entire presentation into in a website, then use this code. और केवल लिंक करना है तो जैसे कि इसको मैंने कॉपी कर लिया और मैं क्लासरूम पे गया, and on this classroom, classwork, create material, say day 3, and now I'm going to link this, add this link. And post. So when I go to this place and run the presentation, see the shape of the presentation will be like this, and it is faster, and the user or whomsoever is seeing the presentation will not be able to copy the content of the presentation. Your presentation is quite safe. So this way you can use a link of the presentation. This is very good tip, that if you want to give the presentation to or link the presentation to any document or any presentation or any site, kindly give the link or link your presentation by making the URL, and your stuff or your presentation will not be hampered or will not be disturbed by anyone. This is the benefit. Clear? Right, sir. Okay, so this is the link, and other one is the embedded code. Means if you are creating the site,
इन द साइट, अभी जो हम करने जा रहे हैं, विद इन द साइट आई एम गोइंग टू embed this presentation. How I can do this, just see. So a need of the task is, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो हमारी गूगल साइट है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि यू डोंट हैव टू रजिस्टर फॉर एनी डोमेन, दिस इज अवेलेबल इन योर आईडी। एंड सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वट एवर रिसोर्सेज यू आर गोइंग टू लिंक विद योर साइट इज अवेलेबल, द रिसोर्स इज अवेलेबल इन योर गूगल ड्राइव। But what item you want to make private and what item you want to make private, public, this depends. So you will have to change the mode. I want to keep this private and I want to keep this public, and accordingly you embed this item into your site, and जिसको आपने राइट दिया है ना देखने का वो देख नहीं पाएगा, और जिसको आपने राइट दिया है देखने का वो देख लेगा। तो कैसे करना है, क्या करना है, यानी सीधी सी बात है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ डोमेन इज नॉट रिक्वायर्ड। इफ वी वांट टू कीप आवर रिकॉर्ड्स एट वन प्लेस और वी हैव टू वर्क ऑन एनी LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, तो गूगल साइट से बढ़िया कोई लोकल ऐप है ही नहीं। चाहे जितनी बड़ी साइट आप बना लीजिए, आपका डेटा सेव रहेगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप उसको पब्लिक करना चाहते हैं तो कर दीजिए, योर डेटा इज सेफ, नो इशू। इंफॉर्मेशन इज रेडली अवेलेबल टू अस ऑन ए क्लिक। अगर ये साइट आप कहीं किसी को रेफर भी करते हैं और कहीं आप जाते हैं, तो using this URL you'll be able to collect the information from your site only. Available to everybody within the domain. Registration of domain is not required, like GoDaddy, Big Rock, इनसे जो जब हम साइट क्रिएट करते हैं तो रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो हमें यहाँ नहीं जाना है, और हमारी गूगल साइट से, यानी जो आपकी आईडी है उसी से आपकी साइट बन सकती है। एंड नो डेटाबेस इज रिक्वायर्ड और टू बी परचेज्ड। नॉर्मली क्या होता है कि व्हेन यू रजिस्टर एनी डोमेन, तो डोमेन तो साइट क्रिएट करने के लिए आपको डोमेन मिलता है, लेकिन उस साइट पे जो डेटा है, वेयर शुड इट बी स्टोर्ड, फॉर दैट यू विल हैव टू बाय द स्पेस, डेटा स्पेस, डेटा सर्वर, एंड दैट इज नॉट रिक्वायर्ड विद गूगल साइट्स। नो एडिशनल वेब सर्वर इज नीडेड। सो जैसे आप एक डॉक्यूमेंट का यूज़ करते हैं, जैसे गूगल डॉक्स करते हैं या गूगल स्लाइड्स करते हैं, गूगल शीट्स करते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये आपके लिए एक एड ऑन है अपने आइटम्स को, यानी जो आपकी कवर्ड है, कवर्ड में जो सामान रखते हैं वो सामान जो आपका इंपॉर्टेंट है आप यहाँ डाल दीजिए। चाहे बच्चों का रिजल्ट हो, चाहे बच्चों के लिए कोई इन्फॉर्मेशन हो, या बच्चों के लिए कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन जो आप शो करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आप अपनी साइट पर डाल सकते हैं बहुत आसानी से। और इसमें होगा क्या, आपके पास सारी ऐप्स अवेलेबल हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बनने वाला है वो ऐप्स आपका यूट्यूब वीडियो डाल सकता है। हाँ, यहाँ पर गूगल साइट में जो गेम्स वगैरह है ना, वीडियो गेम्स वगैरह, वो नहीं डाल सकते। दिस इज अ क्वेश्चन, ये GC1 का क्वेश्चन है कि क्या हम गूगल साइट पर कोई गेम इंस्टॉल कर सकते हैं या गेम डाल सकते हैं, तो हाँ साफ आपको आंसर मिलना चाहिए कि नो। इसके अलावा आप सब कुछ कर सकते हैं। सो एडवांटेजेस ऑफ गूगल साइट्स: फ्री, फास्ट एंड इजी टू एडिट, नो प्रोग्रामिंग और डेटाबेस स्किल्स आर रिक्वायर्ड। नॉर्मली क्या होता है कि इफ वी टॉक अबाउट डेटाबेस मीन्स यू शुड हैव द आइडिया ऑफ SQL, SQL, और यू शुड हैव द आइडिया ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जब गूगल साइट की बात होती है तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आइडियल फॉर न्यूबी हु वांट्स टू बिल्ड ए वेबसाइट फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी जैसे हम टीचर्स लोग हैं, जब फर्स्ट टाइम हमारे सामने ये बात आती है तो वास्तव हम नया लगता है कि हम साइट कैसे डेवलप कर पाएंगे, साइट तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो ये बहुत आसान है,
बड़ी आसानी से आप साइट को क्रिएट कर सकते हैं और अपना डेटा प्रिजर्व कर सकते हैं। नो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन इज रिक्वायर्ड, कोई भी आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इंटीग्रेटेड विद गूगल एप्स, सबसे बड़ी ज़्यादा वॉफल में चाहिए, और साइट पे क्लिक करिए और वहाँ से साइट बनाना शुरू कर दीजिए। यानी साइट का पूरा आपका क्लाउड स्पेस आ जाएगा, वहाँ से आप जो साइट एरिया है वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, वहाँ सेव भी कर सकते हैं। क्रिएटर कैन एक्सेस टूल्स एवरी, यानी कहीं से भी क्रिएटर उसको एक्सेस कर सकता है, बिकॉज आईडी उसकी है, वो अपनी आईडी से अपनी साइट को एक्सेस तो कर ही सकता है। क्रिएटर हैज़ फुल कंट्रोल ऑन पेज एक्सेस एंड परमिशन, जैसा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किसको आप राइट्स देना चाहते हैं, किसको नहीं देना चाहते हैं, इट डिपेंड्स। फंक्शन एज बेसिक प्रोजेक्ट मैनेजर, सिंपल लॉजिक है कि आप इस साइट को लेकर के बहुत कुछ मैनेज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड मेरी प्रिंसिपल मैडम से यही बात हो रही थी कि अगर टीचर्स चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आईटी में इतनी बात हो रही है कि यानी जब तक क्या एविस नहीं बोलेगा तब तक क्या हम करेंगे नहीं। ये तो एड ऑन है, दिस इज एड ऑन टू टीचर्स, कि आप इन चीज़ों को करते रहिए, कोई ना कोई नई चीज़। अभी जो है रिसेंटली गूगल आर्ट एंड कल्चर गूगल ने इंट्रोड्यूस किया है, एंड उसके अंदर आपके करिकुलम से रिलेटेड सैम्पल पेपर्स तक मिल जाते हैं, और बहुत सारी जो वेन्यूज़ हैं वो भी वहाँ पर मिल जाते हैं। यू जस्ट ट्राई गूगल आर्ट एंड कल्चर, उसमें सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। यू जस्ट ट्राई इट, और इसको आप गूगल पर सर्च मारिए, आपको बहुत चीज़ें मिलेंगी। गूगल आर्ट्स एंड कल्चर। Over here, online teaching and Google site. Here we learned that how we'll create the site for teaching and record keeping. Simple सा है कि जो presentation आप बच्चों को दे रहे हैं, if the same presentation or the YouTube link, if you embed in your Google site, this is available to everyone. Whenever they want to see it, they can see. Whenever they want to use it, they can use it. This is the platform where we can create interesting topic stuffs as far as teaching and other education activities are concerned. So what we require for developing a site are stuff to be uploaded. जो stuff आप upload करना चाहते हैं, it should be in your Google Drive. Using tools available for site development. सारे के सारे tools, you know, और tools क्या हैं? Google Sheet है, Google Docs है, एंड गूगल कीप है। जितने भी गूगल की एप्स हैं सारी की सारी वहाँ पर अवेलेबल हो सकती हैं। एम्बेडिंग यूट्यूब वीडियोस, पीडीएफ शीट्स एंड अदर थिंग्स, मीन्स गेम्स छोड़ करके आप सब कुछ एम्बेड कर सकते हैं। शेयरिंग एंड कोलैबोरेटिंग, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, शेयरिंग एंड कोलैबोरेटिंग, दे आर टू वर्ड्स, शेयरिंग एंड कोलैबोरेटिंग। यानी अगर मैं आपसे शेयर करता हूँ लेकिन मेरे पास फुल अथॉरिटी है कि मैं आपको केवल व्यू मोड दूँ, यानी केवल आप उसको देख सकें, लेकिन अगर मैं चाहूं कि आप उसको कोलैबोरेट कर सकें तो आप उसको एक राइट मोड दे सकते हैं कि यू कैन एडिट द मोड, यू कैन एडिट द साइट, यानी जो मैंने किया है उसमें आप भी चेंजेस कर सकते हैं, डिपेंड्स। शेयरिंग ऑन सोशल मीडिया एंड अदर प्लेटफॉर्म, बड़ी आसानी से ये कहीं पर भी आप इसको शेयर कर सकते हैं, किसी भी सोशल मीडिया पे आप इसको शेयर कर सकते हैं। दिस इज योर गूगल साइट। लाइक बनाया था मैंने एक साइट, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कोई भी कुछ भी नहीं है, कोई डोमेन नहीं है। डोमेन क्या है? गूगल साइट, site.google.com, armypublicswaga.com, IT स्टडीज। अब armypublicswaga.com क्या है? दिस इज अवर डोमेन जिसपे हमारी आईडीज बनी हुई हैं। तो ये जो साइट बनी है हमारी स्कूल आईडी बनी हुई है। अगर हम चाहें तो केवल और केवल गूगल site.google.com/view/IT स्टडीज, अगर हमारे पास ये डोमेन नहीं है। सो दिस इज द साइट। किसी का माइक ऑन है। If you want to ask anything, kindly ask. So I have a question. Mm-hmm.
So can we, you mean to say this is the school domain you are using for the site, but we can use our own personal email IDs to make हाँ, our या personal या या sites? यस मैम, यस मैम, अभी बताता हूँ कैसे Right. करना है। Right, sir. अब देखिए यहाँ पर जितने भी हैं सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिंक की हुई हैं। अब यहाँ पर एक चीज और भी आ जाती है कि गूगल ने सबसे बड़ी चीज हमें ये दे दी है कि वी कैन यूज एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज, वेयर दिस इज पंजाबी, हिंदी, संस्कृत, वटेवर, जो भी लैंग्वेज आप चाहते हैं अपनी वेबसाइट में यूज करना, यू कैन यूज इट। पर इसका मतलब ये नहीं है जो बेस लैंग्वेज है वो बदल जाएगी। बेस लैंग्वेज का मतलब जिस तरीके से ये वेबसाइट डिजाइन हो रही है उसका मेथड तो उसकी जो लैंग्वेज होगी वो तो इंग्लिश ही रहेगी, बट यू कैन यूज डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल्स। लाइक ये जो मैंने हिंदी में लिखा हुआ है, ये हिंदी कहाँ से आई है? ये हिंदी मुझे इस साइट ने नहीं दी है। हिंदी में जाने के लिए मुझे क्या करें, गूगल डॉक्स पर मैं गया और उसको स्लैंग बोलता चला गया, अर्धवार्षिक परीक्षा, तो वो ऑटोमेटिकली हिंदी में लिखता चला जाएगा। शुल्क, SHUL के अगर आप लिखते हैं, शुल्क लिखेंगे, शुल्क को ऐसे ही लिखा जाएगा SHUL के, शुल्क, तो ऑटोमेटिकली उसको हिंदी में कन्वर्ट करके दे देगा। मैंने वहां से कट किया और यहाँ पेस्ट कर लिया। तो ये सारे के सारे रिजल्ट जो हैं जो आप हिंदी में देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ गूगल डॉक्स की वजह से है। सो दिस इज अ लेआउट और ये मेरी पूरी साइट है। एक्चुअली इशू ये आता है कि इफ एवरीवन डज दिस वे, मीन्स हर कोई ये काम करना शुरू करे, तो एक एंथुजियाज्म जो होता है ना वो हमारे अंदर भी आ जाए। पर हमने ये देखा कि पूरे साल में अ, हमने तो बहुत कुछ किया, बहुत कुछ नई चीज़ें बताई, लाइक कोलाब्रेशन ऑन गूगल शीट्स, ये बताया कि किस तरह से मार्क्स हम वहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। लेकिन जब टीचर्स ही इंटरेस्ट नहीं लेते तो हम क्या क्या कर सकते हैं? एक सबसे बड़ी बात आती है। अच्छा, दूसरी चीज़ है यहाँ पर एक ऑप्शन है IOI, ओलंपियाड। क्योंकि हमारे पास हमारे जो कमांडर साहब हैं इस बार उन्होंने बहुत फोकस किया इस चीज़ पर कि भाई ओलंपियाड करवाइए बच्चों को। एंड IOI जो है एक इंटरनेशनल ओलंपियाड है इंफॉर्मेटिक्स का। तो इसमें जो इसको जीतने वाले को कम से कम 40 लाख का अवार्ड है, यानी उसके सारे ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। ये मैंने इसमें इसलिए डाल रखा है बिकॉज 11 एंड 12 में बच्चे जो हैं इस चीज़ को अगर करते हैं तो उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा होता रहेगा। एनीवे हम वापस अपने प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। So here there are some options. Get into the Google site, inserting image. तो चलते हैं get into Google sites। तो सबसे पहले क्या करना है, साइट पे जाने के लिए वाफल में जाइए और साइट पर चलिए यहाँ पर देखते हैं साइट्स, या फिर हम वाफल से ही जाते हैं, क्लिक हियर और यहाँ पर आपको साइट मिलनी चाहिए फॉर्म। मिलना चाहिए साइट।
शायद कहीं हम भूल तो रहे हैं, आप दोबारा गौर से देखते हैं। सर इसमें सबसे नीचे जो ऑप्शन है ना, मोर फ्रॉम गूगल, सबसे नीचे। हाँ, अच्छा नहीं, इसमें मार्केट प्लेस आ रहा है आपके में, हमारे में मार्केट प्लेस नहीं आ रहा है। यही होना चाहिए, सिस्को वेबएक्स वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट Sir, टीम्स। search app. Sir, search app. सर और नीचे है, गूगल प्रोडक्ट्स में है किसी, सर गूगल प्रोडक्ट्स में है। गूगल प्रोडक्ट्स, स्लाइड्स एंड शीट्स, कैलेंडर, ड्राइव, अभी तक दिखाई नहीं। वर्क्स फॉर गूगल, अगर है तो आप वहां से क्लिक कर सकते हैं, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ sites.google.com, sites.google.com। तो यहाँ अपने आप, ये अपने आप ही आ जाता है कि sites.google.com। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो यहाँ सिंपली प्रेस प्लस, so this is your page, this is my site, and if you want to give any banner, site about Agra, and if you want to give any picture, if you have, kindly अपलोड करने के लिए मैं क्या एक स्मॉल पिक्चर यही ले लेता हूँ। इसका बैकग्राउंड हो जाएगा, देन हेडर टाइप आप क्या चाहते हैं कि बैनर मेरा चाहिए है आगरा, ये सॉरी लार्ज बैनर, और टाइटल ओनली, दिस इज टाइटल ओनली। और अगर मैं इसको बैनर करता हूँ तो ये बैनर आपको दिखाएगा, और लार्ज बैनर तो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, दिस इज लार्ज बैनर। तो ये आपका साइट हो जाता है। एंड वन मोर थिंग, if you want to share it with anybody, you can use these options, share with others, किसी को भी शेयर कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल मैंने ये शेयर किया, so now this is shared। and if you want to insert, what you can insert here, text box you can insert, images you can insert, embed, लाइक जैसे मैंने बताया कि जैसे स्लाइड वगैरह आपको एम्बेड करनी है, प्रेजेंटेशन एम्बेड करना है, आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये जा रहा हूँ कि क्वेश्चन आता है पेजेस का, हाउ टू इंसर्ट द पेज। सो हाउ टू इंसर्ट द पेज, come to the page tab, and from this tab click plus button,
page about Agra and done. एंड अगर इसका भी सब पेज आप क्रिएट करना चाहते हैं, ऐड सब पेज, ताजमहल. So this is the sub page about Agra एंड उसके अंदर ताजमहल और ये रहा आपका होम. तो ये मेन्यू आपको बनता चला जा रहा है. ओके. एंड इफ यू हैव एनी लोगो वगैरह अगर आप लगाना है तो बड़ी आसानी, बिकॉज ये मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ऑटोमेटिकली आपके सामने चीजें आती जाएंगी. Settings, I'm not going to touch this. वापस प्रेजेंटेशन पर. प्लीज गिव मी अ सेक. एक सेकंड के लिए मुझे टाइम दीजिए, मैं अभी आपसे मिलता हूँ. हेलो, गुड इवनिंग. वो तैयार है. फीडबैक यस. ठीक है. चले ले जाना, उसमें क्या बात है. वो मुझसे बात कर रहा है, मैं पापा से बात कर रहा हूँ. जब कोई देखेगा तभी तो वो आएगा वहां पर. अंकल अंकल कौन अंकल. जो स्टूडेंट गार्ड पे बैठे रहते हैं. हाँ कोई बात नहीं. तो ये मैंने आपको बता दिया हाउ टू गिव द टाइटल टू योर वेबसाइट. एंड ओवर हियर आप टाइटल का साइड दे दीजिए, जो भी नाम है वो दे दीजिए. और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर आपके पास बैकग्राउंड है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से बैकग्राउंड भी जो इसका साइट का इनबिल्ट काफ़ी बैकग्राउंड्स है वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं. चलते हैं कैसे रहते हैं जो भी देख लेते हैं. कि हमारे पास ऑलरेडी है तो हम नहीं लगा दिया. इसको हम कर रीसेट थीम्स में. इसमें इस साइड का है नहीं शायद. जाता है. सेलेक्ट इमेज के थ्रू आप कोई भी इसमें से बैनर सेलेक्ट कर सकते हैं. ओके. नेक्स्ट.
अगर आपको टेक्स्ट इंसर्ट करना है विद पिक्चर तो सीधा आप टेक्स्ट बॉक्स पर आइए। ये टेक्स्ट बॉक्स, दिस इज अबाउट माई साइट। फॉन्ट चेंज करना है, फॉन्ट चेंज करिए और ये रहा इसका। इस वर्ड को इसी से अगर लिंक करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। यहाँ साइट का नाम दीजिएगा, सपोज करिए कि मैं देता हूँ www.army public school agra.com अप्लाई। जब भी आप इसको, लेकिन एक चीज़ और भी ध्यान रखना है, ये मैंने साइट लिंक तो कर दिया, लेकिन वट एवर यू आर गोइंग टू change here, you will have to publish it first. I have created this much, but the site will not be in the position to show or navigate until unless I say publish. So whichever changes I'm going to make, I will have to publish it. So first step is to publish it. So what should be the address to publish this? I'm going to give, say, retaken क्या नाम दें, ताजमहल। हमने नाम लिया है, उस साइट का नाम क्या हो गया आपका, ये देखिए, दिस इज द URL sites.google.com view and Taj Mahal Agra. Now publish it. So now your site is ready. जैसा कि मैंने बोला, अगर मैं चाहूँ तो क्या नाम है, sites.google.com/view/Taj Mahal Agra. So your site is ready. Now I'm going to make some more changes. I'm here. I'm going to give the image. Say I'm going to insert this image.
एंड ये जो है जब आप पब्लिश कर चुके हैं और पब्लिश के टाइम पर ये पब्लिश हो गई, पब्लिश, उसके बाद अगर आप जैसे ही आप इस पर क्लिक करना चाहेंगे मतलब ये साइट आपकी लोड हो गई। कोई और भी हो सकती है बिकॉज दिस इज नॉट द सिक्योर साइट, जो सिस्टम बता रहा है सिक्योर नहीं है, इस वजह से ये अपलोड नहीं हो रही है, अदरवाइज यहाँ पर साइट आ जाती है, राइट। या फिर एक काम हम और भी कर सकते हैं कि जो साइट है वो मैं अपनी वाली दे देता हूँ, IT स्टडीज़ वाली, तो शायद वो यहाँ पर आ जाएगी, एडिट, sites.google.com/IT studies। और इसको आप कर दीजिए अप्लाई, कर दीजिए पब्लिश। We can link the site. I think time is running up, and I must wind up this program, and we'll continue with this Google sites day after, क्योंकि अभी इसमें थोड़ा सा टाइम और लगेगा, करीब आधा घंटा और लग जाएगा। सो इसका टाइम ऑलरेडी हो चुका है, तो आई थिंक इसको मैं जो रिमेनिंग पोर्शन आपको परसों फिर कंटिन्यू करता हूँ। व्हाट डू यू से, कंटिन्यू करूँ, अभी करूँ या अब मुझे इसमें आपको शीट एम्बेड करके बतानी है, इसमें प्रेजेंटेशन यानी 2-4 चीज़ें इसमें रह गई हैं, लेकिन थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, तो आई थिंक इसको मैं परसों वाले सेशन में आपको बताता हूँ। राइट सर। ओके, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो रहा है,
और ऑलरेडी 7 मेरे ख्याल से होने वाले हैं, तो we'll meet day after, और I'll show you the concluding part of this session. Yes, sir. Okay, ma'am. Thank you. Yes, sir. Thank Thank you you, so sir. much, Thank you sir. so much. Thank you, sir. Thank you, sir. So feedback line, please. हाँ, I'll give. मैं क्लासरूम में डाल दूंगा, Okay, thank you, sir. ठीक है ना? Thank you, sir. Google Sites. You have explained so well, and we'll try to fulfill it. That we'll try to make it, or we need your help. हाँ, Too. sure, I'm there. I'm always there. Thank you, sir. Sir, can I get Thank your you. email ID? I need to share my site to you. हाँ, मेरी email ID है, मैं यहाँ देता हूँ, KK Singh APS @gmail.com.